लिए मुस्तैद हैं, जिन्होंने भी स्टंप करके एक सफलता दिलाई अपनी टीम को। फोर्थ विकेट गेंदबाजी करते हुए इस समय तस्की कमेंटेटर बॉक्स के ठीक सामने से स्टंप्स के पास से है और इस बार ड्राइव करने में सफल हुए डीप पॉइंट की तरफ। जब तक की फील्ड होती 1 रन के लिए आराम से चहलकदमी करते हुए पहुंच गए। तौहीद हृदय का थ्रो पहुंचता तब तक। और अब नए बल्लेबाज तीक्ष्णा को सामना करना है तश्किन की तीसरी गेंद का। 214 श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 5.58 की समय औसत है। 38 ओवर का खेल हो चुका है। 7 मैच खेले हैं और 41 रन बनाए हैं कुल तीक्ष्णा ने। क्या कुछ कर पाएंगे यहाँ पर? गेंदबाजी में वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज के रूप में क्या कुछ कर पाते हैं? सामने है उनके तस्किन तीसरी गेंद लेकर स्टंप्स के पास से बाउंसर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए कि आइए आप खुद भी गेंदबाजी करते हैं तो थोड़ा सा स्वाद चखिए बाउंसर का, कैसा लगता है। कैसा लगता होगा निंदो जब आप खुद गेंदबाज हैं और बाउंसर डालते हैं, फिर आपको जब अच्छा बाउंसर मिलता है। Well, that has been an ongoing historical tussle between fast bowlers. I shall give you back what you give to me. Yes, जो आपने जैसा बोया है वैसा पाएंगे। तस्कीन बॉलिंग करने के लिए तैयार। स्टंप्स के पास से अच्छी बॉलिंग रन अप और हल्के से उसको स्टीयर किया। फील्डर वहां पर मौजूद हैं। रन नसूम अहमद के हाथों से रोकते हुए वो उनको 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तेजी से गई थी गेंद सीमा रेखा के पास, लेकिन मौजूद थे नसूम वहां पे। उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया, उनको प्लेस नहीं कर पाए, गैप नहीं ढूंढ पाए। 1 रन से संतुष्ट अपना खाता खोला तीक्ष्णा। 1 रन और श्रीलंका का स्कोर बढ़ा के 215 275 का टारगेट सोच रहे थे वो। काफी अब 12, हालांकि रन 12 ओवर हैं आपके पास, लेकिन 283 का प्रेडिक्शन यदि इस तरह से आप बल्लेबाजी करते रहें तो ऐसा लंका का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। यार अच्छी गेंद, तेज़ गेंद, हल्के से उसको स्क्वायर लेग एम्पायर के पास कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए खेला। 1 रन के लिए दौड़ पड़े, छोर बदला। कोई भय नहीं है कि भाई नए बल्लेबाज को ज़्यादा चांस दें या ना दें। पूरी तरह से विश्वास से श्रीलंका ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट ऑफ लेग गेंद को हल्के से मोड़ के 1 रन के लिए दौड़ पड़े। सो स्कोर बढ़कर 216, श्रीलंका का 215 6 विकेट के नुकसान पर। 38.4 का खेल हो चुका है। 38.5 216 6 विकेट के नुकसान पर। तस्किन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फिर बाउंसर लगातार तीक्ष्णा को 2 बार अभिनंदन करते हुए। कितने बाउंसर डालोगे भैया? एम्पायर नोट कर लेंगे, बता देंगे कि भाई आप ज़्यादा बाउंसर डाल रहे हैं, लेकिन ठीक है, जैसा आप बोएंगे वैसा पाएंगे, ये बताया निंदो ने। ओवर समाप्त हुआ 39वां। 216 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका का स्कोर। श्रीलंका 71 पर, तीक्ष्णा 1 पर। So long as Sri Lanka is there, there is hope for the Sri Lankans to post a good total here. Tikasana can bat a little, and so can the Sri Lankan tail just about wag a little. But Sri Lanka staying there is important. मिराज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं इस समय। कमेंटेटर बॉक्स एंड से ड्राइव किया उसको, बहुत सुंदर 4 रन के लिए। 2 खिलाड़ियों के बीच में से सुंदर प्लेसिंग श्रीलंका की, जो अनिंदो की बात को जैसे सुन लिया उन्होंने कहा जब तक वो मैदान में है वो रनों की रफ्तार बढ़ाते रहेंगे। बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से 4 रन के लिए। सो इस चौके के साथ बढ़कर श्रीलंका का स्कोर 220 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छे स्ट्रोक्स देखने को आतुर यहाँ के दर्शक इस बार ओवर पिच बनाते हुए हल्के से उसको पुश किया। ऑफ साइड में मौजूद थे वहां पर नजमुल हुसैन शांतो, जिन्होंने कहा कि भैया शांत रहिए, कोई भी प्रयास मत करिए, रन बनाने का मैं मौजूद हूं यहाँ पे। और इस बार ड्राइव किया शांतो के बाईं तरफ से कि भैया 1 रन तो लेने दीजिए जब तक कि फील्ड होके आएगी। शरफुल द्वारा 1 रन से संतोष। 221 6 विकेट के नुकसान पर 39.5
3 ओवर के खेल पर मिराज पहली गेंद में उनका अभिनंदन किया था। असलंका ने चौका मार के कुल 9 ओवर कर चुके हैं। 10वां ओवर है, 47 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्हें मिला है। असलंका 76 पर और तीक्ष्णा 1 रन पर सामने है मिराज के। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए ड्राइव किया, उसको तेज ड्राइव था, लेकिन मौजूद थे वहां खिलाड़ी मोहम्मदुल्ला जो कि बहुत तेज थ्रो करते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, उन्हें नहीं बीट कर पाए। 1 रन सिर्फ मिला, स्कोर बढ़ के हुआ 222, 6 विकेट के नुकसान पर। मिराज की गेंद राउंड द विकेट और कलाइयों का इस्तेमाल किया, वहां पर तेज छलांग लगाते हुए रोकने की कोशिश की, सफल भी रहे। 1 रन सिर्फ बना वहां पर। तस्कीन ने जिस तरह से फील्डिंग की थी, रोका उन्होंने आगे रन बढ़ने के लिए। Yes, the Bangladesh fielding, the ground fielding has been good. They've been throwing around and they've been saving runs. And but about the Sri Lankan batting, this must be said that Asalanka has played a very handsome knock here. End of that over, at the end of that over, Miraz is over. He's bowled his quota of 10, 1 for 49. Miraz, Sri Lanka 223 for 6 in 40 overs. Asalanka is in 77, Theeksana is in 2. One will have to wait and see how far the Sri Lankan batting can go from here. As I said, Asalanka staying there till the end will be important to Sri Lanka's hopes. And this commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. My scorer, who's always updating me, I hope Mr. Obi Sharma, he tells me that he's given me the figures. So Sri Lanka reached 52 in 10 overs, 113 in 20 overs, 113 for 3, 52 for 1 of 10, then 162 for 5 in 30 overs, and then 223 for 6 in 40 overs. So that's how it is. Mehdi Hassan Miraz, his figures: 10 overs, no maidens, 49 runs and 1 wicket. Those are his figures. And as we wait for the start of a new over, the floodlights taking effect here, as Thaskin it is bowling to Asalanka. And Asalanka again pulls it away towards the mid-wicket region. It is Das there who feels the throw comes in, and one more to the Sri Lankan total takes them to 224. 40.2 overs gone, and Sri Lanka hoping that they'd be able to reach and post an imposing enough and challenging enough total for the Bangladesh batsmen to chase. 224 for 6, 52 for 1 at 10. And then of course they went on to score 113 for 2 in 20, 162 for 5 in 30, 223 for 6 in 40, and this time this ball is played away by Theeksana towards the Wadish Madon region, not for runs. The Sri Lankan score remains at 224 for 6. Well, this match will be distinguished for the fact that the first time in the history of cricket a batsman was declared out, timed out. Angela Matthews took his time coming in and then taking his stance as Thaskin comes in and bowls to Theeksana. Theeksana this time opening the face of the bat and steering it away towards the deep point region for a single, allowing the more established and informed Asalanka to take strike, who is on 78 of 88 deliveries, 225 for 6 in the 41st over. In the history of ODI cricket, my statistician Manoj updates me, Mahendra Ramanath is the only cricketer who is declared out handled the ball. He achieved this rather dubious distinction versus Australia, while Matthews today became the first player to be dismissed. Timed out. Thaskin comes in to Asalanka, round the wicket, and Asalanka this time to a ball which is
angling into his pads, nicely tucks it away towards the mid-wicket region, all along the ground, all along the carpet for a single. The Arun Jaitley Stadium now bathed in the floodlights. It had enough of the afternoon sun after a rather murky 2 days and a murky morning as well in Delhi. Things cleared up. Taskin now bowls to Thikasana. Over the wicket from the far end, bowls to Thikasana. This is a good bouncer, and Thikasana does well to swerve out of the line of the delivery like an accomplished batsman. Taskin finishes his 9th over. His figures now read none for 33. 3 runs of that over. Sri Lanka 226 for 6 of 41 overs. Asalanka is on 79. Thikasana is on 3 at the crease. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। So there we are, 226 for the loss of 6 wickets. Tanzim will come in for his 8th over from the commentator's box end, and he'll be bowling to Asalanka. Over the wicket goes Tanzim and bowls to Asalanka. Asalanka, this ball straying into his pads, is nicely tucking that away for a single. In comes the fielder from the deep mid-wicket region racing in to meet that ball. It was not timed perfectly, just a gentle tickle, so to say, and that brings Thikasana on strike. 227 for 6. Tanzim going back to the top of his bowling run-up, and he'll be bowling to Thikasana. Thikasana is in 3 of 8 deliveries. Tanzim runs away from us, from close to the stumps. A misdirected bouncer going down the leg side, a wasted delivery, and one more to the Sri Lankan total, an extra delivery to bowl. Young Tanzim, of course, is bending his back. He's putting it everything he can, but in the process straying in line and length as well. A bouncer going down the leg side is nothing but a wasted delivery and an extra run to the opposition. But this time he beats Thikasana as he essays for a drive outside the off-stump. The ball moving after pitching, landing on the seam at reckon, and just moving a little away from the batsman as he essayed for that drive, not quite getting to the pitch of the delivery. Thikasana on that occasion. That line, that probing line off stump and just about outside, is a line that the Bangladeshis have probed throughout. As Tanzim moves away from us and bowls once again, and he's essaying for half drive, half cut is Thikasana, and shadow practicing that shot. Nice Thikasana, but he missed that, and lucky there that he didn't get an edge. Tanzim, he's into his 8th over, 1 for 58 already. Going back to the top of his bowling run-up. The shadows under the lights beginning to show now, as the lights take effect here at the Arun Jaitley Stadium. Once again, pulling back the length a little is Tanzim. And once again, for the 3rd time, Thikasana flashes his bat in the air, doesn't make contact. Lucky for him, he survives, as Tanzim once again goes back to the top of his bowling run-up. The field for Tanzim now well spread out. There is a man at mid-off, there is a man at extra cover, there is a man at point, there is one at the sweeper cover region, as this time he was looking for a run, was Thikasana. Hurries back, the throw dislodges the wickets, but Thikasana was I think safely home. 228 for 6
We're into the 42nd over of the Sri Lankan innings. As Tanzim Sakab walks back to the top of his bowling run-up. The umpire is taking a little time to put the bails back there as Tikasana takes strike. 228 for 6. Tanzim from just below us at the commentary box end runs away from us, bowls to Tikasana, and Tikasana at this time manages to put bat and ball and just pushes for a single, quickly ambling across. This is one thing the Sri Lankans have done well. They've rotated the strike with remarkable alacrity and alertness. Even when they have timed the ball very well and it has run very fast, gone very fast to the fielder, they've managed to take those cheeky singles. At the end of the 42nd over, 229 for 6. And over to my colleague Mukul Goswami for continuation in Hindi. 42 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 64 गेंदें और बची हैं, 48 गेंदें और बची हैं आपकी, जिसमें क्या कुछ कर पाते हैं श्रीलंका, जो कि अपना हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 89 था उसे पार पा चुके हैं। तीक्ष्णा का स्वागत लगातार बाउंसर से किया गया था। 229 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका का स्कोर है इस समय। 42 ओवर की समाप्ति पे 5.45 का औसत है। बल्लेबाजों को विश्राम का कुछ क्षण मिलता है तो वो चूकते नहीं है पानी की बीच में पुकार, जबकि श्रीलंका को तो जरूरत होगी, काफी देर से मैदान पर है, 90 गेंदों का सामना कर चुके हैं। महेश से बातचीत करते हुए अब महेश सामने है तस्किन के, तस्किन कमेंटेटर बॉक्स के ठीक सामने के एंड से, जहां पर दहली जड़ा हुआ है। इंडिया 2023 दूधिया रोशनी से नहाता हुआ ये अरुण जेटली स्टेडियम खूबसूरत दिख रहा है इस समय। सूर्य जैसे जैसे अस्त हो रहा है, श्रीलंका की पारी भी अस्त होने के करीब, और इस बार ड्राइव किया, पूरी तरह से बीच बल्ले पे नहीं ले पाए, कोशिश जरूर की थी तीक्ष्णा ने, लेकिन बॉलर ने खुद तस्कीन ने अपने फॉलोअप पे रोका उसको। कोई रन नहीं, तेज गति से बॉलिंग करने की यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और अचकचाते हुए उसको तीक्ष्णा ने खेला। श्रीलंका 229 6 विकेट के नुकसान पर 43वां ओवर चल रहा है। करंट रन रेट जो है उससे 272 रन होने चाहिए, ये पूर्वानुमान है सिर्फ, क्या कुछ होता है देखना है। स्किन गेंद पटकी हुई कंधे का जोर लगाते हुए सिर्फ सुरक्षात्मक तरीके से खेला हुआ, फील्ड पर मिराज के हाथों में पहुंची, जब तक कि स्क्वाड इस पॉइंट पे और फील्ड होके शांत बैठे हैं। यहाँ पर दर्शक जो बांग्लादेश का समर्थन कर रहे थे, बहुत उत्साहित थे, वो कुछ खामोश है। अनिंदो, Yes, a little quiet phase here. Sri Lanka, I'm sure, searching for a little acceleration, but with 6 wickets down, they can't just play around. And this time, फिर बाउंसर से स्वागत किया, a bouncer. शायद 5वां या 6ठा बाउंसर है जो तीक्ष्णा को मिला है, लगातार आमंत्रित करते हुए कि या तो आप पुल करिए, पुल करिए। But Tikasana, not daunted by that one, he essays into an uppercut, a la Sehwag. शायद अनिंदो की बात सुनकर वो उस तरह का प्रयास करें, क्योंकि इस समय एक दिवसीय मैचों में आपको रन बनाना है, किसी भी तरीके से बनाएं। जहां आपको बॉल अगर परेशान कर रही है उसमें से ढूंढिए, अवसर ढूंढिए आपदा में। तीक्ष्णा बल्लेबाज सामने एकदम, और इस बार ऑन साइड में थी, उसको हवा में जरूर खेला था, फील्डर मिड विकेट पर दौड़े उसके पीछे, लेकिन 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। एक बार की हवा में उछली थी, फील्डर दौड़ भी थे खुद शाकिब, लेकिन उन्हें बीट करती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर। सो इस चौके के बाद तीक्ष्णा की हिम्मत बढ़ गई होगी, इसमें कोई शक नहीं। बाउंसर के बाद अगर आप चौका मार लेते हैं, ऑफ लेग स्टंप पर बाहर की तरफ निकल रही थी। That was a ball inviting to be hit. It had come hit me, written all over it, straying down the leg side, almost knee high, and it was inviting to be hit. So Tikasana was an 8. Taskins
गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरत प्लेसिंग उसकी, पीछे दौड़ रहे हैं सौरभ, उन्होंने उन्होंने छलांग लगाते हुए गिरते हुए रोका, लेकिन 2 रन से तीक्ष्णा संतोष। हिम्मत बढ़ती हुई तीक्ष्णा की, इसमें कोई शक नहीं। बाउंसर खा खा के थोड़ा सा उनकी हिम्मत बढ़ती हुई, लगातार 10 रन का स्कोर उन्होंने बना लिया है। This is a beautiful feeling when the bat comes in contact with the ball, and especially from the middle of the bat, it does something to the confidence of the batsman. और दर्शकों को भी बहुत मजा आता है जब बल्ले के बीचों बीच गेंद टकरा के सीमा रेखा को चूमती है। तो तीक्ष्णा इस समय आखिरी गेंद करने के लिए तैयार, 10वां ओवर है उनका। तीक्ष्णा दाएं हाथ की गेंदबाज, फिर वही शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन इस बार स्लिप पर फील्ड हुई, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त हुआ श्रीलंका का, 43 रन श्रीलंका के बने हैं, 235 रन, उसमें 6 विकेट के नुकसान पर। बांग्लादेश की तरफ से ये 43वां ओवर था। असलंका 80 पर और तीक्ष्णा 10 पर। Incidentally, Manoj updates me with a bit of a stats which might be interesting for those of you. Asalanka's 80 is the highest by a Sri Lankan batsman in the World Cup in Delhi. Asalanka's is batting on 18 not out. Asalanka scored 79 versus South Africa here in the same ground. Jayasuriya had scored 79 versus India way back in 1996, a match I had the privilege to be commentating way back in time, and then 76 by Kusal Mendes versus South Africa here in 2023 in this World Cup. Shariful Islam, 7 overs, no maidens, 37 runs and 1 wicket, and Tanzim it is who has been pressed into the attack, and a single will accrue as Tikasana plays the ball away towards the third man region. The Asalanka it was 236 for 3. तंजिम गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कमेंटेटर बॉक्स के ठीक नीचे से उनके सामने तीक्ष्णा जो कि 10 रन पर खेल रहे हैं। 19 बॉल का उन्होंने सामना किया है। 10 ओवर 10 के पूरे हुए। स्कोर हमारे ओपी शर्मा ने बताया। बाउंसर हवा में और इसी के साथ 4 रन, कोई नहीं रोक सकता। तीक्ष्णा जो बराबर बाउंसर झेल रहे थे, उन्होंने बताया कि भैया जब मैं बल्ले का मुंह खोलूंगा तो सीमा रेखा के आसपास ही दिखेगी गेंद। इस बार जैसे ही उन्हें बाउंसर दिया, उन्होंने पुल किया, किनारा लेते हुए बल्ले का सीधा विकेट कीपर के पीछे से 4 रन। कुछ भी कहिए, इसे बहुत अच्छा शॉट मत कहिए, लेकिन 4 रन बनाना उत्साह के लिए भरपूर है। It doesn't matter how they come, they need to come. Runs need to come. That is the be all and the end all of white ball cricket. उनके हाथ में ग्लव्स में कुछ लगी है चोट, क्योंकि वो ग्लव्स से लग के टकराई थी। मनोज बता रहे इस मैदान में श्रीलंका का विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर रहा है 326, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में 428 रन के मुकाबले बनाया था। बहुत छोटा स्कोर था, यदि अगर मैं कहूँ कि दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को देखें। 272 पर 4 भारत के विरुद्ध उनका 95-96, तो 272 से बाहर ले जाना चाहते हैं मनोज इसको। सो इस चौके के साथ श्रीलंका का स्कोर 240, 6 विकेट के नुकसान पर। 43.2 ओवर का खेल हो चुका है। 5.54 के औसत से श्रीलंका 81 रन पे और तीक्ष्णा 14 रन पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद बराबर रनों को बढ़ाते हुए कहाँ वो डक करे जा रहे थे, अब रन लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रोक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन 14 में ओपी शर्मा बताएंगे 3 चौके, 2 चौके। और इस बार फिर ड्राइव किया, बहुत सुंदर पॉइंट बाउंड्री के पास, वहां पर फील्ड जरूर हुई, लेकिन तीक्ष्णा को स्थानीय दर्शक बहुत समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वो कुछ आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। There is nothing like good old lusty hitting. It doesn't matter whether it is very cricketing or not. So long as the runs come, so long as the boundaries come, so long as there is something happening out there in the middle, the spectators are happy. They get their money's worth. 241, 6 विकेट के नुकसान पर तंजिम 6 रन दे चुके हैं अभी तक। फिर शॉट ऑफ लेन गेंद, पुल किया खूबसूरती से उसको 6 रन के लिए। शानदार शॉट ऑफ लेन गेंद थी। असलंका ने बताया भैया तुम तीक्ष्णा को छक्के के लिए भले प्रेरित न कर सको, शॉट ऑफ लेन गेंद डाल दो, मुझे मत देना, मैं 80 पे खेल रहा हूं।
469वां ये छक्का है, बहुत ही सुंदर। जैसे ही लेग स्टंप पर गेंद को पाया उन्होंने उछाल लेता हुआ बाउंसर बहुत सुंदर पुल किया सीधा सीमा रेखा के बाहर। 247 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार धीमी रहती हुई गेंद थी, आखिरी क्षण में पुल करने में सफल हुए। डीप स्क्वायर लेग पर फील्ड होती, 1 रन से संतोष से 88 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। असलंका एक दीवार की तरह खड़े हो गए हैं बांग्लादेश के इरादों के बीच। अभी तो फिलहाल आई थिंक ही इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स एज वन वुड से। तंजीम 13 रन दे चुके हैं, आखिरी गेंद। क्या मनस्थिति होगी गेंदबाज की जब 13, 14, 15, 16 रन बन जाए, उनकी पिटाई भी ऐसे हो तो बड़ी मुश्किल होती है। एक बहुत अच्छा संयमित प्रदर्शन था अभी तक बांग्लादेशी गेंदबाजों का। तंजीम गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हटते हुए उन्होंने कट करना चाहा था, पूरी तरह से चूके। ओवर समाप्त हुआ, 44 ओवर का खेल, 248 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका का स्कोर, असलंका 88 पे और तीक्ष्णा 15 पे। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Well, as there is a midfield conference, my mind goes back to the 1996 World Cup match here. For the first time, there was a change in one-day strategy, going out there in the opening and blazing away. That happened when Sanat Jayasuriya opened here after India had posted 271 for 3, and Sri Lanka finally went on to score 272 for 4 to win that one-day match in 1996. I remember the match for the simple reason that Sanat Jayasuriya came out blazing, and the wicketkeeper Kalu Vitarana also, and they scored blazing away. And this time, as once again he's playing an uppish looking shot, but in no man's land and in safe zone, 249 for 6, Sri Lanka now, and we are into the 45th over. Asalanka is on 89, and I don't know if it's in his head there somewhere that he's now within shying distance of a century here. But Tikasana right now, against him is the Bangladesh captain Shakib Al Hasan. Round the wicket, bowls to Tikasana. Tikasana drives, but not for runs. The ball gently rolling out on the square on the onside for the mid-wicket fielder to come in a few yards to his left and field. Shakib bowls, this time pushed through the air. A fastish delivery. And Tikasana, bat and pad close together, plays it out on the cover. The crowd getting into a cheering mode. And this time Tikasana drives, and he will get at least a single as the ball rolls away towards the long on region where Sharaful is stationed. 250 of the Sri Lankan innings coming in the 45th over, 44.4 overs to be precise. That's now Asalanka. And Asalanka, this ball middle and off stump, he's nicely rolling his wrists over, flicking it away towards the mid-wicket region for a single. He moves into the 90s, does Asalanka. Sri Lanka to 251 for 6 and into the 45th over now. It's this partnership, 38 of 42 deliveries. Asalanka's 21, Tikasana has contributed 16. So Tikasana has grown in confidence. He's negotiated the bouncers which have been sort of bowled at him to intimidate him, but he's not been swayed by all of that, as Shakib bowls and Tikasana driving it out in the offside, not quite timing it as sweetly as he would have wanted to, but enough for him to fetch him a single. He retains strike, 252 for 6 at the end of the 45th over. Well, my statistician
Manoj once again updates me that if Lanka manages to score 100 here, he'll be the second Sri Lankan. Pardon, he'll be the second Sri Lankan to post a century here. Earlier, way back in 1982-83, Roy Dyer scored 102 versus India. That was in a test match, right? In a one-day. The first ODI played here, yes, I remember that. And Roy Dyer, what a sensation he was as he took Kapil Dev apart to the ropes. He was such a treat to watch, was Roy Dyer. For a fall now, round the wicket, bowls to Tikasana. Tikasana cramped for room there. There is a throw there, and the wickets bails up into slot. One will have to wait and see. But I don't think any damage was done, though it's been referred to the television umpire. But yes, the batsman was safely home. So no damage done. Sri Lanka remain on 252 for 6, 53 for 6, and it's going to be Lanka who is on strike, who is on 90 of 95. A very well composed, well played knock by Lanka. One which has already taken to the Sri Lankan total to some degree of respectability, and maybe will take Sri Lanka to some degree of assurance as the next ball is nicely tucked away behind square, rather towards the square leg region for a single, and taking Sri Lanka now to 91. 91 of 96 deliveries, 254 for 6, we enter the 46th over of the Sri Lankan innings. Charit Lanka 91 of 96, 44 dots. And how many fours has Lanka hit? 5 fours and 4 sixes. And this ball has been played away all the way to the boundary for 4 runs. Tikasana this time. Sharaful was the bowler. Sharaful bowling outside the off stump, giving Tikasana some room, and Tikasana playing that ball towards the point boundary all along the carpet for 4 runs. Tikasana growing in confidence and in substance and in dominance over the bowling, and he is nicely ducking into the next one from Shariful as he pitches it in short. He's looking in all ways an accomplished batsman out there is Tikasana. A 45-run partnership of 47 deliveries. Now Sri Lanka's scored 22 of them, as Tikasana has been an equal contributor by scoring 22 of those runs. Tikasana waits now for Shariful. Shariful round the wicket, bowls to Tikasana. Tikasana goes for a mighty heave. For a mighty heave, good old hoik over mid-wicket. Oh, it could have gone anywhere for all you know. It could have gone over third man, it could have gone over mid-wicket, it could have gone anywhere. He just swirled around with his bat in a mighty heave. Shariful back to the top of his bowling run-up. Tikasana is on strike, he's in 22. Shariful from wide of the crease, bowls to Tikasana. Tikasana, this time an uppish cut towards the third man region. He's out. He's out. Tikasana playing that uppish cut towards deep third man. And it was straight down the fielder's throat. The ball was in the air. Tikasana off the ground, so to say. Tuskin was it who took the catch? Doesn't seem like Tuskin. I'll have to wait for a confirmation from my scorer. Tanzim it seemed, but that leads to the fall of the 7th Sri Lankan wicket. Tikasana gone for 22.
258 for 7. Now Sri Lanka at the end of the 46th over. तीक्ष्णा ने कोशिश की कि श्रीलंका की तरफ से कुछ रोमांच यहां पर दर्शकों के अंदर फूका जाए। श्रीलंका 91 रन पर है, क्या अपना शतक बना पाएंगे? 4 ओवर हैं, भी तो बहुत समय है। सूरज ढलता हुआ प्रश्न पूछता हुआ, दूधिया रोशनी से नहाया हुआ एक खूबसूरत स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम साक्षी बन रहा है 38वें मैच का, विश्व कप के आखिरी मैच का, यहां पर जो कि दिल्ली में आयोजित होना है। 258 7 विकेट के नुकसान पर शाकिब बॉलिंग करने के लिए तैयार। श्रीलंका उनके सामने हल्के से उसको ऑन साइड की तरफ खेला, 1 रन ऑफ साइड पर गया। दो रन ले चुके थे जब तक कि दौड़ते हुए पहुंचते पर फील्डर का थ्रो पहुंचता, काफी वाइल्ड थ्रो था। इस समय खेल धीरे धीरे रोमांच की तरफ अग्रसर हुआ। तीक्ष्णा ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करके यहां उत्साहित किया, हल्के से 1 रन के लिए दौड़ पड़े जब तक कि फील्ड होता लॉन्ग ऑन पर। 261 7 विकेट के नुकसान पर शाकिब अपना आखिरी 10वां ओवर लेकर इस समय 56 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट लिए हैं और चमीरा सामने आ गए हैं श्रीलंका की तरफ से शाकिब के सामने। चमीरा फील्डिंग का मुआयना करते हुए, घेराव लिए हुए फील्डिंग उनके लिए, ऑफ साइड में स्लिप काफी स्क्वेरिश। शाकिब की गेंद हल्के से पूरा सम्मान दिया, बल्ले के बीचों बीच आने दिया, जैसे कि कोई आरंभिक बल्लेबाज सम्मान देता है शुरुआती ओवर्स को। पूरी कोशिश करते हुए शाकिब की उनको विचलित करें और इस बार फिर अंदर आती हुई गेंद बीट हुए पूरी तरह से, खुद से असमंजस में प्रश्न पूछ रहे थे चमीरा कि वो क्यों नहीं पढ़ पाए इस गेंद को। 94 पर है श्रीलंका, सीनियर पार्टनर है, हो सकता है कहें 1 रन लेके आ जाओ भैया, छोर बदलो। शाकिब की गेंद फिर अंदर आती हुई गेंद अच्छी, पूरा सम्मान दिया। 3 गेंदें आप निकाल दें तो सामने वाला जो कि 94 रन पे खेल रहा हो उसका मन निश्चित रूप से विचलित होगा। उन्होंने कुछ इशारा नहीं किया अभी तक चमीरा को। श्रीलंका 261 7 विकेट के नुकसान पर 5.57 की औसत से इस समय रन बन रहे हैं। शाकिब के बॉलर और ड्राइव किया उसको, जिसका कहते हैं परीक्षण करते हुए, अपने आप का संयम को टटोलते हुए उन्होंने पुल जरूर किया था, लेकिन बैट बॉलर वहां पे फील्डर मौजूद थे। 1 रन बना, श्रीलंका का स्कोर बढ़ के हुआ 262 रन 7 विकेट के नुकसान पर 47 ओवर की समाप्ति। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। आखिरी पड़ाव की तरफ अग्रसर श्रीलंका की बारी, 262 7 विकेट के नुकसान पर रन रेट 5.57 की है और 4 रन शाकिब के आखिरी ओवर में उन्होंने इस समय अपने 10 ओवर पूरे कर लिए। शाकिब के पूरे हो गए और अब तंजिम में कमेंटेटर बॉक्स के ठीक नीचे से बाएं की गेंदबाज, हल्की पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर के रूप में पहुंची बल्लेबाज के पास। उन्होंने कोशिश जरूर की थी चमीरा ने स्ट्रोक खेलने की, लेकिन कहीं आसपास नहीं थे। शौरफुल को गेंदबाजी का जिम्मा दिया है इसने कमेंटेटर बॉक्स के ठीक नीचे से। हमसे दूर जाते हुए 47 अंक की जर्सी पहने शौरफुल दूसरी गेंद लेकर और इस बार पटकी हुई गेंद शरीर पर झेली, पुल करना चाहते थे पूरी तरह से, चूंकि अंदर गाते हुए गेंद थ्रो जरूर पहुंचा स्टंप्स पर, लेकिन छोर बदल चुके थे दोनों ही बल्लेबाज। श्रीलंका 94 पे, चमीरा 1 पे, 263 7 विकेट के नुकसान पर 48वां ओवर चल रहा है।
छाती पे झेली बाउंसर को, तो निश्चित रूप से कुछ दर्द तो हुआ होगा। तो क्या उस दर्द का प्रतिरोध करेंगे, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स दिखाएंगे? शमी 1 रन पर खेल रहे हैं, 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं। शोरफुल अपने ओवर की 9वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर 44 रन देके 2 विकेट उन्होंने अब तक ली है। बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट और फिर ड्राइव किया, कोशिश की। असलंका अब लग रहा है कि बागडोर संभालना चाहते हैं, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश में। भैया बल्ला घुमाओ, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो रन तो वैसे भी नहीं बन रहा। असलंका सेइंग भैया ज्यादा टाइम नहीं है, अभी बैट घुमा लो, सेंचुरी बना लो, थोड़ा सा और रन बटोर लो। इस गेंद में निश्चित रूप से वो कुछ कोशिश करेंगे, ये मेरा मन कह रहा है, क्योंकि 94 रन पर खेल रहे हैं, 99 गेंद का सामना कर चुके हैं। आगे आके मारेंगे और पुल किया और विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन। मैंने अंदाज से लगाया था कि वो आक्रामक हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। शतक न बनने पाने की बेचैनी मनोज बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। I did not know, Mukul, you had the ability to get into the batsman's mind. कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो इस मनोदशा में क्या कर सकता है। हाँ। 94 रन में प्रसव पीड़ा होती है, उस तरह की पीड़ा में है, क्योंकि सेंचुरी बनानी है। प्रसव पीड़ा। शरफुल 98 पे उनके सामने असलंका 100 गेंदों का सामना कर चुके हैं। कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग एम्पायर के पास धकेल कर 1 रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन और ये शतक। जबरदस्त तारीफ करनी पड़ेगी इस बल्लेबाज की। उस स्थिति में इससे प्रवेश किया था जब श्रीलंका की पारी ढह रही थी और एक पहाड़ की तरह दिल्ली के इस अरुण जेटली स्टेडियम में वो खड़े हुए, सारे दर्शक उनको उत्साह से उनका अभिवादन कर रहे हैं इस शानदार शतक पर। श्रीलंका के 101 बॉल में 155 मिनट तक इस मैदान में वो खड़े रहे, डटे रहे। मनोज बता रहे हैं डाइस के बाद ये दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने शतक लगाया है श्रीलंका के इस मैदान में। वैसे तो बहुतेरे शतक लगे हैं। अनिंदो क्या कहेंगे इस पारी के बारे में? Well, I mean, I think a very, very handsome knock. I mean, if Sri Lanka reaches this total, a kind of total which will give their bowlers something to defend, something to challenge the Bangladeshi chase, it'll be to Sri Lanka's strength. शोरफुल और पुल किया उसको, वहां पर मिड विकेट पर फील्ड होगी जब तक कि दास द्वारा 1 रन से संतोष। कोई भी गेंद छोड़ना नहीं चाहते, जैसे आपने कहा था बल्ला घुमा लो, शतक बना लो, क्योंकि वक्त बहुत कम है, उसे बताते हुए 48वां ओवर समाप्त। 270 7 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका 101 पर और चमीरा 2 पर। आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर अनिंदो। Well, the last batsman to have scored a century, as our statistician Manoj told us, was Roy Dias, which was way back in 1982. So that is about 18 plus 23, 41 years ago. And Charith Asalanka is only 26 years of age. So he wasn't born when that happened. And those of us who are a little vintage, of course, will remember that match. That cannot be etched out of our memories. That's the advantage. That's the advantage of having greying hairs. That is the advantage of having greying hairs. You remember a long time back in history. As Asalanka this time once again is going for a pull shot backward of square to this ball from Tanzim. Didn't quite time it as sweetly as he has been so far, but the ball landed in no man's land, short of the fielder, coming in from the fine leg region, and it was Tanzim, I think, and no, Tanzim was the bowler. It was Shamim, if I'm not mistaken, and 271 now for 7. We enter the 49th over. Chamira will be facing
Tanzim. Tanzim runs in over the wicket, bowls to Chamira. Chamira has gone for that big shot over mid-wicket, but it was more aerial as Das comes in from the mid-wicket region. Lytton Das and feels the ball landing in no man's land, but giving that shot, giving Chamira the opportunity to cross over and allowing Lanka to have a go at the Bangladesh bowling. The closing stages of the Sri Lankan innings, they will take any runs any which way they come, as Lanka this time goes for a big one over square leg for a huge towering 6. What a shot there, Lanka. Short outside the off stump, and he went down on his knees and pulled it over for a huge towering 6. The 5th 6 in his innings. So Mukul, what do you say about that shot? जबरदस्त प्रहार करते हुए वो बहुत ही आक्रामक रूप अख्तियार कर चुके हैं और बहुत सुंदर. And the next ball is racing away like a tracer bullet to the third man region. Lanka played that shot and it was the deep third man. The ball went aerial. We were unsighted a little, and now we have a clearer picture. Aerial route over third man. Das was stationed there near the ropes, and the ball coming straight down. He didn't have to move much. For a moment one thought it had gone over the fence, but Das was definitely there, and he picked up what was in the end a comfortable catch. Charith Asalanka going for 108 of 105 deliveries. Sri Lanka 278 for 8. We're into the 49th over of the Sri Lankan innings, and that'll bring in strike the new batsman, Rajitha. Charith Asalanka, the second Sri Lankan to score a century here at the Arun Jaitley Stadium after the great man of the yesteryears, Roy Dyers, and that has sort of buoyed up the Sri Lankan innings quite a bit as Tanzim bowls this time to Rajitha. Rajitha essaying into a half full, half dry, doesn't quite get hold of the ball, and the ball peters out rather innocently towards the mid-wicket region and not for runs. Well, Asalanka was going for the shots, and that is what is expected of a batsman who is well set. He is expected to accelerate towards the end, to propel his team to as much as is possible. And this time Rajitha has gone for that shot, and will it be caught? Yes, it has been once again. Das it is. On the deep square leg region, the 9 Sri Lankan wicket to fall, and Tanzim picks up 2 in this over to end his spell with 3 for 80. This was short, and he went for that shot. He was unsighted by that bounce a little, a sort of evasive half pull, half hook kind of a shot, and it ended Rajitha's stay at the wicket. Sri Lanka now 278 for 9 at the end of the 49th over. Just one more over to go, and will Bangladesh be able to skittle out or run through the Sri Lankan innings? Will Sri Lanka score a few more? Let's see where it goes. The run rate 5.67, which is decent enough. The Kotla wicket, there's been nothing so far, but one doesn't know how it will behave after the dew comes on in about an hour's time from now. Shorefall for the 10th over, for the last over of the Sri Lankan innings, and he'll be bowling from our end, which is the commentary box end, from just below us, and the batsman to face him will be Chamira. Chamira facing Shorefall. Shorefall bowls a bouncer.
Will that be called one? Yes, it has been signalled for one bouncer. Sharaful pitching the ball short, and Chamira going for a pull shot, but it didn't make contact with the ball, and Sharaful walking back to the top of his bowling run-out. Now the floodlights have taken full effect here at the Arun Jaitley Stadium as Sharaful provided the crease balls, and this time it's been pulled away nicely towards backward of square, towards the fine leg region. Two fielders converging on that ball. The single is all that will accrue to the Sri Lankan total, taking them to 279 for 9. The last 4 deliveries of the Sri Lankan innings to come up here. Sharaful walking back to the top of his bowling run-up, bowling round the wicket. Some last-minute adjustments, and two Sri Lankan tailenders have a mid-wicket conference. Madhushanka it is, who's on strike against Sharaful. A mighty hike, misses, and that's a run out. So it would seem it has been referred to the third umpire, Mushfiqur, walking towards the third umpire to convince him that he actually need not go upstairs, but the umpire has decided to go upstairs, and yes, clean. The replay shows that he was short of his ground there. So the Sri Lankan innings folds up in the 50th over, and the final score, Sri Lanka 279 all out. That leaves Bangladesh 280 to chase, 279 in 49.3 overs, leaving Bangladesh now 280 to chase for a victory here. Mukul. बहुत ही शानदार पारी का समापन जिसको कहें, श्रीलंका ने लड़खड़ाते हुए शुरुआत की थी, बहुत ही बेहतरीन 279 रन और 280 रन की चुनौती प्रस्तुत की है बांग्लादेश के सामने। और क्या कुछ अब तक हुआ है इसका विश्लेषण होगा, बांग्लादेश कैसे क्या कुछ करेगा, कौन बनेगा विजेता, सुनने के लिए हम आपको दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. और स्पाइनर्स गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद रखने की जगह के ऊपर कुशल परिरा 205 गेंदों के ऊपर 4 रन बनाए। दाएं हाथ के प्रथम निशांका ने 236 गेंदें खेली, 41 रनों की पारी खेली और प्रथम निशांका फिर अपनी विकेट